फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज वेंस फ्रॉम ईस ऑफ फाइल्स कैंप्स। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लिसनिंग के अंदर करने जा रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर सभी कुछ बोल जाते हैं, हमें सर पता नहीं चलता। तो प्लीज आपको इसके अंदर थ्री थिंग्स, वैसे मोर देन थ्री थिंग्स है, आपको नीड है अपने माइंड में रखने की, कीप इन योर माइंड। क्या क्या है कि पहले ये सोचो कि प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है या पास्ट के बारे में बात कर रहा है या फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन हमारा है पास्ट के बारे में, टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो अभी आपको सिर्फ पास्ट के बारे में ही जो वर्ड्स बोले जाएंगे इसके रिलेटेड उन्हीं पे आपको ध्यान रखना है और टिक करना है, रेदर देन से दूसरे नहीं सुनना है। जैसे मोस्टली वो फ्यूचर के बारे में अगर ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो आपको जैसे ही वो सुना तो आप वहां पे टिक कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनके अंदर वो सारे के सारे बोल के जाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पास्ट रिलेटेड बात होगी, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे पास्ट रिलेटेड बात है, तो आपको उन्हीं पे ध्यान रखना है और उसके अंदर क्या क्या बोल रहे हैं उन पे आपको टिक करना है। अगर वो फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग हुआ तो फिर वो आपका आंसर नहीं होगा, और अगर वो अभी का है तो फिर भी वो आपका आंसर नहीं होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स इन अखिरा Mayaka's study, Akira Mayaka's study, sorry for wrong pronunciation, study were all majoring in, जो स्टूडेंट्स थे अखिरा मायकेस स्टडी के अंदर, वहां पे वो सभी के सभी स्टूडेंट मेजरिंग मतलब किसके अंदर उनकी अच्छी कमांड थी या मेजर थे, फिजिक्स में थे और साइकोलॉजी और फिजिक्स दोनों के अंदर थे, और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो इसके अंदर थे। तो आपको पहले से अपना माइंड में प्री प्लान ये करना होगा कि आप बहुत डिफिकल्ट सुनने जा रहे हैं। मे बी वहां पे सिंगल बोल के आंसर आगे बढ़ सकते हैं, पर आपको पहले से रेडी हो रहना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपने सुनते हैं इसके अंदर इस तरह से वन बाय वन आप पहले जब वो 30-40 सेकंड आपको मिलते हैं उसमें आप इस तरह से अपने माइंड में बिठा दो कि अभी आपको पता है क्या मैंने अभी देख लिया। अब इसको आपने जल्दी से अपने माइंड में रखना है कि वहां का कोई स्टडी है अखीरा में का, वहां के कुछ स्टूडेंट हैं और वो स्टूडेंट सभी मेजरिंग किस में है, फिजिक्स में है या फिर फिजिक्स एंड साइकोलॉजी में या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एंड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है। तो आपको ये ध्यान से सुनना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं, finally managed to read the article you mentioned, the one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah, I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah, I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics, they were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering and math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. Okay, तो मेजरिंग वो किसमें थे, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, बट वो लाइक जो फिजिक्स कर रहे थे एज अ पार्ट ऑफ देयर स्टडी को कर रहे थे। बट सभी के सभी मेजरिंग किसमें थे, साइंस में, टेक्नोलॉजी में एंड इन द इंजीनियरिंग में। That's correct. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory. Okay, let's talk about the next question. अब next question का उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, द एम ऑफ द मायकेस स्टडी वाज टू इन्वेस्टिगेट, किस चीज को उन्होंने इन्वेस्टिगेट मींस जांच करना है, सर्च करना है, जो भी है What kind of women choose to study physics? सिर्फ उसी महिलाओं को, women's को उन्होंने फाइंड आउट करना है कि जो चूज क्या करती हैं, कौन सी स्टडी चूज करती हैं, फिजिक्स है। तो what kind of women choose to study physics? Okay, a way of improving women's performance in physics. सेकेंड उनका इन्वेस्टिगेट किसमें करना है कि women's की परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, किसके अंदर, फिजिक्स के। तो पहला, दूसरा और इसका काम क्या है, तीसरी। नेक्स्ट, वेदर fewer women than men study physics at college, क्या मैन की तुलना में कम विमेन्स स्टडी फिजिक्स की करते हैं उस कॉलेज में, जो भी कॉलेज का नाम बताया जाएगा। तो उनको ये चेक करना, तो उनको थ्री थिंग्स चेक करनी। पहली क्या चीज है कि कौन सी महिलाएं क्या करती हैं, फिजिक्स करती हैं। दूसरा उनको क्या चेक करना है कि महिलाओं का फिजिक्स के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, उन्होंने इंप्रूव करना। और लास्ट में उन्होंने सिर्फ
ये चेक करना है कि क्या मीन्स कि क्या कम महिलाएं मैन की तुलना में फिजिक्स की स्टडी करती हैं, मतलब कम महिलाएं मैन की तुलना में, इट मींस मैन ज्यादा करते हैं क्या, ये महिलाएं कम करती है। तो मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो आपको इसमें द मेन एम ऑफ द माइकीज या मियाकीज कॉलेज सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस वाज टू इन्वेस्टिगेट। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। Tree physics courses at college, and also that on average, the women who do enroll on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Okay. Right. Now let's see if I... Okay. So they are talking about the performance. They're talking about the check the performance means कितनी महिलाएं वहाँ पे. So that's why the answer is B. They're talking about the B. वो B के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कितनी महिलाएं काम कर रही है, कैसे भी उनका परफॉर्मेंस कैसा है फिजिक्स के अंदर. So they are talking about the B number. उन्होंने सिर्फ B number के बारे में बात की है. If I can remember, it was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. That's what... Okay. उन्होंने बात तो मैन की भी की बट वो एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा उनका इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मींस नहीं है. बट उन्होंने कहा कि मैन जो भी है उन्होंने कुछ बोला, बट ये जो इन्फॉर्मेशन बोली है ये बिल्कुल इससे एक्यूरेटली मैच कर रही है और बाकी इन्फॉर्मेशन अलग है वो इनसे मैच बिल्कुल नहीं कर रही है. अगर आपको लगता है कि इसमें उसने बोला है तो मैन कुछ एक्सपेक्ट कर रही है. वैसे भी उसने बोला कि उनका एम क्या है, एम तो इंप्रूव करना है. हाँ तो एम बाकी सब उसका ऑब्जर्वेशन है. तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्योंकि उन्होंने कुछ बोलते जरूर, मैंने पहले ही बोला था कि सभी का बात करेंगे, सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने मैन और विमेन से, क्योंकि मैन ने उनका एक्सपेक्ट किया, मैन ने कि विमेन्स कितना है कहाँ पे कैसा एक्सपेक्ट किया, बट यहाँ पे क्वेश्चन से वो मैच नहीं कर रहे हैं. सो आपको इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करने की नीड है. What the women thought, and that made them nervous. So listen, the next ones. अभी हम third number question पे पहुँचते हैं. So the third number questions क्या है? The third number questions the female physics students were wrong to believe that the female physics students were wrong to believe उनका जो फिजिक्स की स्टूडेंट्स थे या फीमेल स्टूडेंट्स थी वो सभी गलत थी और विश्वास क्या करती थी दैट द टीचर्स मार्केट देम इन एन अनफेयर वे. उनका ये सोचना था कि वहां के जो टीचर्स हैं वो उनके प्रति क्या है, उनका अनफेयर वे से मतलब मार्क करते हैं, मींस चेक करते हैं, नोटबुक चेक करते हैं, कुछ भी वो मार्केट इन एन अनफेयर वे. द मेल स्टूडेंट एक्सपेक्टेड देम टू डू बैडली. जो उनका विश्वास था वो कहते थे कि मेल स्टूडेंट्स हैं एक्सपेक्टेड देम टू डू बैडली. अच्छा ओके, वो महिलाएं ये सोचती थी कि जो वहां पे मेल स्टूडेंट हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको, मतलब महिलाओं की वो बैड करेंगे. तो पहला तो वो खुद सोचती थी कि जो वहां के टीचर्स हैं वो उनको जो मार्किंग या मार्क्स देते हैं तो अनफेयर वे में. दूसरा वो सोचती थी कि वहां पे जितने भी मेल स्टूडेंट हैं उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये महिलाएं जो भी हैं परफॉर्मेंस बैड करती हैं. मतलब दूसरा विचार इनका ये था फीमेल्स का, मतलब ये खुद ही सोच रही थी कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा. नेक्स्ट, I believe that their test result were lower than the male students. थर्ड नंबर वो ये सोचती जो उनका रिजल्ट आता है वो मेल स्टूडेंट की तुलना में क्या है, कम है. तो आपको इस तीन चीजों को ध्यान में रखना है. पहला, उनको ये लगा कि जो एग्जामिनर टीचर्स जो भी वहां पे है वो उनको एक अनफेयर वे में उनकी नोटबुक्स को या शीट्स को चेक करते हैं. दूसरा, उनको ये लगता है कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम
हम मतलब महिलाएं ये सोच रही हैं कि एक्सपेक्ट करती हैं कि मेल सोचते हैं कि फीमेल्स बैडली परफॉर्मेंस करती हैं या बैड परफॉर्मेंस करती हैं जो भी है। नेक्स्ट ये सोचते हैं महिलाएं ने तीसरा जो सोचा है कि इनका जो रिजल्ट है वो मेल स्टूडेंट की तुलना में इन कंपैरिजन टू द मेल स्टूडेंट्स लोअर है, मतलब नॉट गुड है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। So they did get poor results, but actually they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, Okay, they talk about मतलब वो ये सोचती हैं कि वो बैड करते हैं, बट इसने बता दिया है कि कोई भी ऐसी एजम्पशन नहीं करता कि मतलब ये सोचती हैं कि मेल स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं इनको, मतलब एज्यूम करते हैं कि ये बैड परफॉर्मेंस करते हैं। तो बट वो अभी उन्होंने बता दिया कि कोई भी ऐसा नहीं सोचता है, तो इसलिए इसका भी बी होगा, मतलब इनको ये लगा है मेल्स के बारे में। तो अभी उन्होंने आंसर अभी बोल भी किया है। नेक्स्ट anyway, what Miyake's team did. Next, fourth number. Miyake's team asked the student to write about. तो किसके बारे में लिखना है? ये किसकी टीम ने कहा है? मियाकीज टीम ने कहा है किसको? स्टूडेंट्स को कि आप कुछ लिखो, और क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, तो ये हमें इसमें देखते हैं पहले। What they enjoyed about studying physics. उनको फिजिक्स करते करते सबसे अच्छी चीज क्या लगती, क्या एंजॉय करते हैं while studying physics? तो उनको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, एंजॉयमेंट के बारे में while studying physics. नेक्स्ट, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल। तो आप उनको ये कहा गया है स्टूडेंट्स को कि जो लोग सक्सेस है, सक्सेसफुल उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनके बारे में लिखो। सक्सेसफुल पीपल के बारे में, इसके अंदर जो किसी भी डिपार्टमेंट में है वो यहाँ पे बात करेंगे, उनकी जो मियाकीज टीम है वो कह रही है। समथिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट टू देम पर्सनली, कुछ ऐसा बताना है इम्पोर्टेंट जो क्या हो, पर्सनली हो। तो आपको इस तरह से पता लग गया कि उनको क्या करना है, जो एंजॉय करते हैं फिजिक्स के अंदर, ऐसी बात। नेक्स्ट, सक्सेसफुल पीपल का एक्सपीरियंस चेक करना, या सक्सेसफुल एक्सपीरियंस पीपल चेक करनी है, तो उनका कौन कौन सा रहा है, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस कैसा रहा है लोगों का, वो चेक करना है। नेक्स्ट थिंग इज कि उनको इंपॉर्टेंट, जो पर्सनली उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट था, तो वो आपको उसके बारे में चेक नहीं करना, उनको क्या करना है, लिखना है। तो ये कौन सी टीम एक्सपेक्ट कर रही है, क्या किसको कहती है, किसको पूछ रही है, किसको? स्टूडेंट्स को। मियाकीज टीम आस्क्ड द स्टूडेंट को कहा है उन्होंने। सो लेट्स स्टार्ट, मूव फर्दर। फोर्थ नंबर, यस। Did was quite simple. Getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? A values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more. Okay, यहाँ पे कुछ थोड़ा बात कर रहा है कि उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करनी, कुछ सिग्निफिकेंट थिंग्स, मतलब एक तो क्या का सब्जेक्ट के बारे में बात करनी, कुछ जो उनको सिग्निफिकेंट लगे। सिग्निफिकेंट इट मींस इंपॉर्टेंट लगे। हम दे आर टॉकिंग अबाउट द बी एंड सी, देखते हैं कैसे अपने को, मुझे ज्यादा फोकस सी पे ज्यादा है, सी पे। Or general things like music or people who mattered to them. Right. So the Okay, but they're talking about the people who matter to them, मतलब पर्सनल, जो सिर्फ उनको ही मैटर करे, मतलब पर्सनल, इसमें एक्सपीरियंस वाली कोई बात नहीं। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज द सी। तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, बोल के समझ गया कि वो ऐसी स्टडी नहीं है, अपनी स्टडी के बारे में नहीं, जो आप अपनी स्टडी से थोड़ा हट के। तो दैट्स व्हाई आपको इस तरीके से इस चीज को सुनना होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड होते हैं क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे की सर सारा का सारा ये बोल दिया गया है। तो प्लीज आपको थोड़ा ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा। So let's move further. Fifth number पे चलते हैं। So the fifth number question is, what was the aim of the writing exercise done by the subjects? Or sorry, they not subjects, it's incorrect mentions, the students, done by the students. So what could be the answer? To reduce the stress, to strengthen and to strong verbal ability, and to motivate logical thinking. To logical thinking,
The third thing is logical thinking. Next one is the verbal ability and the speaking ability. And the next one to reduce the stress, like they are under burden, they are under pressure. So need to reduce all that. So what we will listen the main aim of the writing exercise. For example, I give you the writing. So what is the main object, main goal of like writings done by the students there? So reduce stress, strengthen verbal ability, or to encourage and motivate logical thinking. So listen carefully, please. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Thank you. The psychological factors need to when they just get the poor performance. They're talking about the A number from here. Like I'm not talking about the verbal ability, encourage logical thinking. We'll just listen it later on. But the answer is still I'm getting in like more than 80% is reduce the stress, like psychological factors, like जो आपको मानसिकता से जो मानसिक होते हैं जो factors वगैरह उनके लिए उनको क्या करता है ये reduce करता है. So listen more please. But what the researchers in the study hadn't expected was talking about the next questions. They have just said to reduce the stress. They haven't talked about the verbal ability and even the logical things. They haven't talked about. They haven't mentioned over there. So plating, whatever we have listened. This line we have just listened. So that's why I will tick over here. So you also need to tick over here. The next thing is there are the 6 number questions. What the 6 number questions are? What surprised the researchers about the study? What surprised them? So let's listen how the researchers got surprised. How they got surprised? How few students managed to get A grade? Like the few students means बहुत कम students ने A grade achieve किया. Okay, the positive impact it had on the physics results for women's जो had on the physics results for the women's के लिए जो physics का result था इसने इस पे क्या डाला बहुत ही ज़्यादा leave किया positive impact. The next is the difference between the male and female performance. उसके अंदर वहाँ पे दोनों की performance के अंदर difference आया. Difference तो वैसे ही पहले से चला था. I don't think see but let's listen क्या होता है तो हम इसको सुनते हैं. Question number 6. Was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? Okay, so they have talked about जो कि women's का पहले beforehand means जो पहले performance था वो बहुत ही poor था, बेकार था और अब जो performance हुआ है so वो इस बात को लेके थोड़ा surprised हुए थे कि उनका performance अभी अच्छा गया है. So आप प्लीज थोड़ा सा इसको back में सुन लेना. Let's start. Like, did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to beforehand in Yes, now listen please. Women were seriously underperforming beforehand in Okay, वो seriously underperformance मतलब उनका performance अच्छा नहीं था beforehand means पहले, लेकिन अब जो क्या हुआ है उनका performance उनका result बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया है. comparison with the men. Yes, mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students... Okay, so next one's like अब अपने 7th number सुनते हैं. What's there? Greg and Lisa think Miyake's results could have been affected by. तो किससे affect किए गए? Affected by the length of the writing. जो वहाँ का result है उसका affect होना उसके लिए कौन सी चीज़ responsible है? तो length of the writing, number of the students who took part. Okay, number किसका students का जिन्होंने उसमें क्या किया था participate किया था.
इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट्स वर गिवन, या फिर वहां पे क्या बात की इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स को गिवन थी, तो अपने को कौन सी चीजें लिखते हैं, एक तो लेंथ जो राइटिंग दी थी उसके बारे में बात करेंगे, या फिर नंबर्स जो स्टूडेंट्स के बारे में वो बात करेंगे, या फिर लास्ट में जो इंफॉर्मेशन उनको हैंड ओवर की गई थी उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज लिसन करते हैं इसको क्या कह रहा है ये। Do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing, that might have affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. The answer is a C. Means whatever they have been told, जो भी उनको बताया गया था, जो भी उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो उसके बिहाफ पे ये कह रहा है कि उनका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ है, अफेक्टेड हुआ है। उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की लेंथ राइटिंग के बारे में तो बात की है, बट नो लेंथ के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। एंड इवन दे हैवंट टॉक्ड अबाउट एंड दैट द टॉपिक विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने इसके बारे में भी कोई बात नहीं की है। दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द इंफॉर्मेशंस, लाइक इंफॉर्मेशन सीधा नहीं बोलेंगे, दे हैव टू व्हाट यू हैव बीन टोल्ड, व्हाट द स्टूडेंट्स हैव बीन टोल्ड, जो भी उनको बताया गया था, इट मींस बताया गया मींस उनको जो इन्फॉर्म किया गया था। So please आपको इस तरह से ध्यान से सुनना है हर चीज को, each and every word को, each and every line को ध्यान से सुनना है। So let's talk about 8 number। 8 number क्या कह रहा है? What they decide? Okay. Gad and Lisa decide that in their own project they will compare the, क्या compare करेंगे? Two writing tasks डिफरेंट का। ए राइटिंग टास्क पहले में दो, दूसरे में ए विद एन ऑरल टास्क। अब इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, बट इसमें दोनों के दोनों राइटिंग है, इसमें एक राइटिंग है और एक ऑरल। ऑरल मींस स्पीकिंग, जो भी आप मौखिक कहते हैं क्या, और टू डिफरेंट ऑरल। अब अपने को पता लग गया इसमें पूरा बढ़िया समझ आ गया। एक दोनों राइटिंग ऊपर, ए में दोनों राइटिंग, सी में दोनों ही ऑरल, और बी में एक ऑरल और एक राइटिंग। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से आपने पकड़ किया है। Listen please. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe, or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even half do the same. Okay. I have to just listen, like the writing task and even the oral. But listen a little more what they say. Like up to now, just they have just like talked that the writing task and even the oral. Okay, oral. They haven't talked about the two writing tasks. No, so I will cut it. But let's listen what they say. What they say more. Same writing task as in the original research, and half to a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, like nothing. I think there's nothing else. So listen a little bit. Let's go back. And half to a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, About something. So please listen. 8 number. So, anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe, or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Okay. Or even half do the same writing. Okay. Even writing तो उनको करना ही है, मींस राइटिंग के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, so that's why हम इसको काट देंगे।
अब राइटिंग के बारे में एंड द बॉयज लाइक क्लियर इज सेइंग दैट राइटिंग एंड इवन वन इज और टास्क. अब वो क्या कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट ये होंगे या टू डिफरेंट हो राइटिंग टास्क ओनली. तो अपने को ये सुनना है कि अभी टू अगर बोला उन्होंने टू डिफरेंट राइटिंग टास्क तो फिर तो बी को like we will just cut it rather than we will go with the B, maybe a writing task with an oral like a different kind of topic और हो सकता है. But listen, आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा two different writing tasks के मैंने बोला, then we will mention the A with the answers, and if they have talked about, if they will talk about writing task of different, oral task of different, like of different view of different one. Task as in the original research and half to a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or some. It's a A number. It's a A number. Okay? तो इसमें A के बारे में बात कर रहे हैं. It means एक different ये होगा और एक different दूसरा writing task होगा. So that's why not a B. The answer is A. Let's move further. It's the toughest one. तब मैंने बताया कि MCQ questions होते हैं वो सबसे toughest one होते हैं. तो आपको प्लीज ये 21 से स्टार्ट हो जाएंगे. मे बी वहाँ पे अभी जो 11 से भी स्टार्ट कई बार हो जाते हैं, बट 21 से ये स्टार्ट होंगे और 31 to 40 फिलिंग द ब्लैंक्स होगा रील टेस्ट के अंदर. तो कई बार ऐसा होता है कि ये 31 से 40 कर देते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स 21 से 30 कर देते हैं. तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत बढ़िया तरीके से. What the next one is saying that also. The main finding of the Smolinski's research was that class teamwork. The main finding of the Smolinski research was, जो Smolinski research थी उसका main finding क्या था? That class teamwork. Class teamwork क्या है? Class teamworks activities. Okay, class teamwork activities. तो अपने को ये फाइंड आउट करना है क्या activities were most effective when done by all women. Okay, जो class टीम वर्क एक्टिविटी थी उनका सबसे इफेक्टिव परफॉर्मेंस आया, मोस्ट इफेक्टिव, जब वो सभी महिलाओं ग्रुप ने, ऑल वुमेन्स ग्रुप ने उसमें पार्टिसिपेट किया या उन्होंने वो किया. नेक्स्ट, क्लास टीम एक्टिविटी हैड नो इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द. ओके, तो इसने नो इफेक्ट किस पे? बोथ मैन एंड वुमेन्स की परफॉर्मेंस को. पहला क्या सुनोगे? इट्स द मोस्ट इफेक्टिव हुआ. क्यों? इसमें सारी की सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था या उन्होंने वो जो भी डन किया था. नेक्स्ट, टॉकिंग द बी, नो इफेक्ट, इसने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला मैन एंड वुमेन्स की परफॉर्मेंस पे, मतलब उनके रिजल्ट्स पे. नेक्स्ट, improved the results of the men and women's उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी या रिजल्ट था उनका, improved the result of the men more than women's. अब ये फिर प्लस पॉइंट इसकी साइड लेंगे, इसकी साइड माइनस लेंगे. मतलब इसने क्या किया? इंप्रूव किया मैन को कि उनका रिजल्ट वुमेन की तुलना में बेटर आए. तो अभी इसको सुनते हैं क्या कहता है. Let's listen. Something else. That's it. Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess. The women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No progress, no, nothing. Actually, B. The answer is B. Okay, no effect. Means कुछ भी नहीं इसने कोई डाला उसके performance वगैरह पे. तो I think no effect on the performance of men and women. Mean both gender, both sex के कोई भी performance पे असर नहीं हुआ. Good. Okay.
So the 10 number questions, what will Lisa and Greg do next? Lisa और Greg next क्या करेंगे? They will talk with the professors or a science class or a science timetable. What they will do the next. So listen carefully. हम देखते हैं इसके अंदर बहुत simple question है, although लगेगा, but it can be a little bit hard for you. Shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes, or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That'd be better. Great. And we could even... Okay. जैसे इसने they just talked about, उन्होंने बात की है कि science timetable and even talk to a professor. That's a good idea. उसके बाद उसने बोला जो कि एक अच्छा idea है. It means they are just जो उन्होंने last में बोला है कि जो कि एक अच्छा idea है. They talked about the professors. So I think the answer is A. But listen please. Even get to observe one of the classes. What for? Well, Okay, वो उन्होंने कह रही कि बाद में हम जाके क्या करेंगे? Observe करेंगे science class को. So that's why I will go with the A answer. Even A और B दोनों ही same लग रहे हैं, but I will go with the A. And let's see क्या आपका गलत भी हो सकता है, no problem over there. But I will go with the A. So thank you very much, please. I will see you next time with new video. Till then, take care and bye bye.